श्रीमन्नारायणीयम् अथ पञ्चमस्कन्धः। विंशदशकम् ऋषभयोगीश्वर चरितम्। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निद्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा। अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्य तुल्यं सुतमध्यमान स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाण स्थिरो दधा बर्हिषि विश्वमूर्ते। नाभिप्रियाया मथमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूऋषभाभिधानः आलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविताशेष जनप्रमोदः। श्रीहर्ये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते। इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववश्च नास्मिन्न जनाववशे। यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्वमर्षमेन व्यददासु वश्वम्। जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीं मथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनत्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा। न वा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान्। सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्रा स्तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः। उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्ति मथा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम्। परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः। शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्य परं स्वरूपं। दवाहृताङ्गकुटकाचले त्वं तापान् ममापा कुर्वातनात्। श्रीकृष्णशरणं मम। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।